नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत एकात्मीक आदिवासी उदरगत संस्थेचे सशक्तीकरण आनी एकत्रीत आदिवासी उदरगत प्रकल्पांचे सशक्तीकरण ह्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. देशभरात रावपी आदिवासी समाज सांस्कृतीक नदरेन खूब गिरेस्त आसा आनी ह्या आदिवासी समाजाक उदरगतीच्या मार्गाचेर व्हरपा खातीर जाणीवपूर्वक यत्न करपाची गरज आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें. उदरगतीचे फळ देशांतल्या दर एका घरात आनी दर एका गावात पावपाक जाय असोय उल्लेख त्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान केलो. ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड में बनाना चाहिए. आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहाँ तक हम पहुंच पाए, कहाँ तक नहीं पाए. पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं. लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए. आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत नेपाळाचे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष रवी लामिछाने हांची भेट घेतली. प्रसार माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या धोरणांतल्यान नेपाळ हो शेजार प्राधान्य भागीदार देश आसा अशेंय सांगलें. दोन्ही देशांमदले खाशेले आनी भोवआयामी संबंद चड उंचायेचेर व्हरपा खातीर नेपाळांतल्या नव्या सरकारा वांगडा वावुरपाची आस्त भारताक आसा अशेंय तांणी फुडें सांगलें. दोन्ही देशांनी एकठांय येवन आनी समृद्ध फुडारा खातीर वावर करपाची इत्सा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष रवी लामिछाने हांच्या विचारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिलो. भारतीय विमान कंपन्यांच्या घरगुती आनी आंतरराष्ट्रीय कार्यावळीक आदार दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 10,000 कोटी एटीएफ विमान इंधन दर स्थिरीकरण निधी मान्य केला. आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की हो एक सांबाळपाची निधी जी भारतांतल्या नियोजीत विमान कंपन्यां खातीर एटीएफ दर स्थित करपाक मदत करतले. ह्या निर्णयाक लागून विमान पर्यावरण यंत्रणाचेर आदारून आशिल्ल्या 77 लाख नोकऱ्यांची राखण जातली. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टाक लागून आंतरराष्ट्रीय एटीएफ दर अंदू मार्चांत दर लिटराक 60.5 रुपया आशिल्ले ते मे म्हयन्यांत 142 रुपया जाल्यात. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक एटीएफ प्राइस स्टेबलायझेशन फंड क्रिएट किया गया. वर्सुकी सौर क्षमता वाडोवपाच्या मळार भारतान अमेरिकेक मात करून 2025 मेरेन संवसारांतले दुसरे व्हडले सौर बाजारपेठ जावपाचे आसा. भारतात 155 गिगावॅट GWD सौर क्षमता स्थापन करपाचो म्हत्वाचो मार्गदर्शक ध्येय साध्य केला. हाका लागून देशाक 50% बिगर जीवाश्म इंधन क्षमता म्हळ्यारूच नॉन फॉसील फ्युअल आनी राष्ट्रीय थारायिल्लें योगदान वेळा पयलींच पुराय करपाक मदत जाल्या. PM सूर्यघर येवजण सारकिल्ले म्हत्वाकांक्षी उपक्रम जिणेंत बदल घडोवन हाडटात. ह्या येवजणे खाला आतां मेरेन 40 लाखां वयर घरांक रूफटॉप सोलर सुविधांची सक्षम केल्यात अशेंय तांणी सांगलें. भांगराच्या विक्रीच्या अहवालांक खंडन करतना भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज स्पश्ट केलें की तांच्या भौतीक भांगराच्या सांठ्यात बदल जावंक ना. हे सांठे 880.52 टन स्थिर उरल्यात. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून परकी चलन सांठ्यांचेर जावपी परिणामां आडोवपा खातीर केंद्रीय बँकेन सुमार $12 अब्ज भांगरा विकला आसूं येता अशी अहवाला उपरांत RBIचें हें स्पश्टीकरण जालां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपता.